एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। वी हैव जस्ट चेक्ड इन। लवो लवो ओ मा लवो। You are going to Kerala? Of course. गाना चल रहा है मेरे दिमाग में। कौन सा वाला? लवो लवो ओ मा लवो। हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। वी हैव जस्ट चेक्ड इन। बोर्डिंग टाइम है वो 4:40 का है, क्योंकि सवेरे सवेरे हम लोग बिना चाय कॉफ़ी के निकले थे। सो नाउ वी विल हैव समथिंग टू ईट। Hello everyone, welcome back. So finally we started our trip from Delhi to Kerala. We took a flight early morning from Delhi airport to Kochi airport and we reached there in about 3 hours 10 minutes. You know, actually it took us about 2 months to finally decide where we wanted to go, and thankfully we decided Kerala. Since it was winters, it really took us long to decide because we didn't want it to end up at a place which was like too cold. We had other places in mind, some snowy place or so, but yeah, it was a good decision to go to Kerala. बहुत बुरी हालत हो गई भागते भागते। अब फाइनली अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। छोले भटूरे खा के बहुत खिला के बहुत भगाया है। गेट 55 था हमारा और इतना भगाया पसीने छूट गए। We are in Cochin now. कोची। We are in Kerala. और दिल तब खुश हुआ जब एक बच्चा तेज की चिल्लाया वहाँ पे कि माँ केरला पहुँच गया। और मैं केरला पहुँच गया। इतना एक्साइटेड होके चिल्ला रहा था, मैं केरला पहुँच गया। सो वी आर हियर नाउ। और 29 और 31? 29 गेट नंबर और 30 पिलर नंबर। So this was our driver Ansel, who was arranged by our travel advisor, and he remained with us for the rest of our trip. So Ansel took us to the places where we were scheduled to go according to the travel plan. Here I just wanted to acknowledge that it really took us a little longer to actually come back to vlogging. It's been almost a year after I have arrived back to New Zealand from India, because we were a little busy with our normal life after coming back here. So I just want to say it's never too late to come back. And to the viewers, thanks for your support, for staying with us for this long. हाँ, तो ये पैराडाइज हॉलीडेज है जहाँ से हमने बुक करा अपना ये पूरा 1 वीक का। तो अब देखते हैं कैसा करते हैं पैराडाइज हॉलीडेज वाले मामले। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे फ्रेश अप वगैरह होके फिर यहाँ से अतिरापल्ली, आई थिंक आई एम सेइंग इट राइट। हाँ, अतिरापल्ली। फिर वहाँ जाएंगे। एक बहुत नोटिस करने वाली चीज़ जो कि जो वेदर है यहाँ पर का, अभी जैसे हम 15 जनवरी को दिल्ली से चले, दिल्ली में हो रही थी ठंड और यहाँ पर हो रही है भयंकर गर्मी। सब तरफ चल रहे पंखे और लोगों को भी देखो, सबने मतलब टी शर्ट वगैरह वैसे ही पहना हुआ है। दिखा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब पंखे चल रहे हैं सब। 28 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर। Now we'll have our breakfast और फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से अथिरापल्ली वाटरफॉल्स के लिए और वहाँ से सीधे जाएंगे मुन्नार। क्यों रखा? चटनी पूड़ी थोड़ा थोड़ा सा डाल दो ना। तो हम लोग जा रहे हैं अथिरापल्ली की तरफ। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट करके फ्रेशन अप होके अब हम जा रहे हैं। तो वहाँ पे नीचे लोग भी खड़े हुए, गाड़ियाँ भी गई हैं नीचे तो सारी। यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रखा है काफ़ी, मतलब। और ये बोल रहे हैं कि भाई आज कम है, अदरवाइज और दिनों जो होता है ये ज़्यादा होता है। और अभी हमें उधर की साइड पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है। जहाँ पे ऊपर की साइड हम जाएंगे अभी, उधर पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। So as we reached the entry point for Athirapalli Falls, we had to buy tickets which costed 80 rupees per person by that time, which was like a year back, and we had to walk through this long trail in between the woods, which felt great and mesmerizing. There were a lot of people and there were sweet little monkeys as well.
Seeing those little monkeys there was a little scary, but they were busy dealing with their own life and their own stuff, so it was fine. So we finally reached the famous Athirapalli Falls, where a lot of movies were shot like Bahubali and Pushpa, and it definitely took a lot of steep walk to reach this place, which was, I tell you, not easy, and of course going upwards was even tougher, but all in all it was worth it. In the month of January, we left from Delhi and it was cold there. I was wearing a jacket, and the moment I reached Kerala, it was like we were sweating. We were sweating of heat, and even this place, the Athirapalli Falls, at that point of time, it was not like you couldn't feel the breeze at all. It was hot. It was kind of a different experience, and the beauty of the place was worth watching. So when we started from Kochi, this was going to be a long journey, and in the midway we visited Athirapalli Falls, and we were off to Munnar, where we had our stay waiting for us. We reached there by the evening. So right now I will end this video here, and I will see you in my next vlog, where I will show you the rest of the journey. Bye.